Hello friends, how to use characters and make them come alive. Welcome to Characters and Character Artists. In my debut novel, Together with You Forever, I received two critical reviews. Since it was a story of love, the reviews were also according to the romance in the novel. One review was that the story was like a real life story. As it happens in real life, one takes decisions and moves on. Moves on in life in real time. Well, another critical review was that the characters are well crafted but don't seem to have been sketched in depth. From these comments, you would have understood how important it is to make the story compelling for the readers and how to sketch characters in depth to appeal to the reader's emotions. This also shows the importance of characters, I guess, or characters, character or characters in a plot. A writer has to consciously look for critical reviews than merely positive reviews for the novel. Because critical reviews teach the writer for crafting an even more compelling plot and compelling story. Challenges in writing get more opportunities. Challenges in writing get more opportunities for the writer to try different methods of writing. Let's discuss characters per se. While researching in my debut novel, I learned that characters are the soul of the plot. Without the characters, human or non-human, the story would not move an inch ahead. However, many disagree with this. The reason being, the plot is primarily a sequence through which the story moves ahead. But to move the story, there has to be in being a certain structure of connectedness. This is brought out by the characters. Each character, whether a protagonist or an antagonist, meaning a hero or a heroine, good or bad character, both have to have significant place in the development of the story. As writers, there is a general belief that there are plot-driven stories and character-driven stories. The principal difference between a plotter and a plantser, which we have discussed before in much detail. I love both methods. The reason being, I began as a planter, character driven,
after the initial setting of the scene to the plot driven aspect, where I had to even interchange my protagonist. Yet, there was an adversary in my romance novel. And the reason being, the adversary was a teacher of sorts of my voice in a contemplative manner. Most often, it is the hero or the protagonist around whom the story would keep on revolving. But the other characters also have some role or objective to fulfill in the scheme of things. Meaning, in the novel, as in real life crisis, where obstacles are raising numerous questions which need to be answered, so also in a novel, there are questions raised by the author. These have to be answered in some depth, and hence the initial question that was raised in reviews is that characters lack depth, meaning the amount of emotional content or emotional connectivity in every relational act or another character supporting one another or supplementing the other makes enormous sense in writing in the novel. And this is part of the critical choice decision, difficult decision, which the author has had to make right at the beginning of the story. It is necessary to carve out strong characters so that the story moves ahead with the characters, showing their might in an otherwise hopeless scenario. Since I have penned down Together with You Forever, TWYF, as also a Hindi book as Tera Saath Rahe, I would like to read these aspects from chapter 14 twice. Once from my English book, second मेरे हिंदी किताब से, so that the people who want to read तेरा साथ रहे will also understand what I am trying to say, जो भी मैं कुछ यहाँ पे कहना चाहता हूँ. For example, in Together with You Forever, on page 91, chapter 14, Love After Marriage, there is a contemplation, a critical choice made by me while writing my manuscript. मैंने मेरी किताब तेरा साथ रहे में 91वें चैप्टर में 91वें पन्ने में 14वें चैप्टर में प्यार के बाद शादी या शादी के बाद प्यार, इसके ऊपर कुछ विचारधाराएं पेश की है. Because I am a two linguistic writer, English and Hindi, so for national people who are reading Hindi would be able to understand this better. उनको
अच्छी तरह से ये समझ जाएगा, इसलिए मैं ये हिंदी में भी बात करना चाहता हूँ. बट फर्स्ट आई रीड इट इन इंग्लिश. एंड आई रीड फ्रॉम माई नॉवल टुगेदर विथ यू फॉरएवर. She pondered if love was only before marriage or if there was another love after marriage. Pooja asked this question to herself over and over again umpteen times. She took to read on the internet, in libraries, and asked friends, but no one gave her a really honest answer. She was talking to Robin's friend Eric, who had married a simple girl, Sophia, whom he had never met before. It was a marriage arranged by their two parents, Sophia and Eric. Both complemented each other in many respects. ये मेरे हिंदी किताब, इंग्लिश किताब टुगेदर विथ यू फॉर एवर का जो मैंने लिखा है वो मैंने पढ़ा है. मेरी हिंदी किताब में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है मेरे इंग्लिश किताब की. सो क्या लिखा है देखते हैं. 14वें चैप्टर में शादी के बाद प्यार. पूजा ने इस बारे में मनन किया कि क्या प्यार सिर्फ शादी से पहले रहता है या क्या एक और प्यार था, शादी के बाद का प्यार. पूजा ने खुद से यह सवाल अनगिनत बार पूछा. उसने इंटरनेट पर, पुस्तकालयों में पढ़ा और दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे कोई वास्तव में ईमानदार जवाब नहीं दिया. वह रॉबिन के दोस्त एरिक से बात कर रही थी, जिसने एक साधारण लड़की सोफिया से शादी की थी, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था. यह उन दिनों में मम्मी पापाओं द्वारा अरेंज की गई एक शादी थी. सोफिया और एरिक दोनों कई मामलों में एक दूसरे के पूरक थे. सोफिया घरेलू रसोई के और इस तरह की बातों में अच्छी थी. एरिक कम ज़रूरतों वाला एक आदमी था. वह दफ्तर जाता था. सिंगापुर से अपना CPA पूरा करने के बाद वह एक आसान नौकरी पाना चाहता था, जो उसके दिन ब दिन की ज़िंदगी बिताने का ध्यान रखेगा. वह बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं था. सोफिया और एरिक संतुष्ट आत्माएं थे. एक दिन सोफिया की मम्मी रुथ बहुत बीमार पड़ गई. वो कुछ महीनों के लिए अस्थमा से पीड़ित रही और उसके बाद उनका निधन हो गया. जब रुथ बीमार थी, उस अवधि के दौरान एरिक ने सोफिया की मम्मी को वास्तव में सहयोग दिया. उनके दमा के गंभीर दौरों की देखभाल करने के लिए कई बार जागते रह गया कर उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ता था. यह तब घटित हुआ था जब एरिक और सोफिया की हाल ही में शादी हुई थी. करीब 1 महीने या इतना ही पहले. इस बात से सोफिया और एरिक
एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सोफिया अक्सर एरिक के लिए अपनी खुद की नींद बलिदान कर देती थी और एरिक ने कभी भी यहाँ तक कि एक बार भी शिकायत नहीं की थी कि सोफिया की मम्मी ने उसे किसी भी तरह से कठिनाइयों में डाला था। वास्तव में वह सोफिया की मम्मी से इतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी मम्मी से करता था। इससे उनके नए वैवाहिक संबंध में एक निश्चित गाढ़ापन आया। वे एक दूसरे के अच्छे पक्ष को हमेशा देखते थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बारे में यहाँ तक कि उनके परिवारों के बारे में फैसला नहीं सुनाता था। एरिक ने पूजा से कहा, यह वह जगह है जहाँ हम दोनों समझे कि प्यार एक फूल की तरह है। इसे खिलने के लिए अनुमति दो। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह शादी के बाद प्यार सुलझ गया, आप में से कई लोगों को ये समझ गया होगा कि ये सुलझ गया है मामला। The answer is supplied or given in the chapter itself, not much delayed, but still raising questions in the mind of the readers as to what would be the answer to this question. These were the most difficult days for Robin's friends Eric and Sophia, as her mother was seriously ill with asthma and virtually on her deathbed. Eric and Sophia were very common people. For example, R.K. Lakshman's common man. Anyone who just made both ends meet. बस खाना खाना, पानी पीना, सो जाना और काम करना, बस इतना ही काम था। What transpired between Sophia's mother and her son-in-law, Eric, defines how important it is to be authentic while penning down your novel and giving a correct response to the question raised initially by the author. मैंने तो ये लिख दिया, बोल दिया, I am not going to reveal here the conversation, but certainly it supported a cause towards love after marriage and powerful love after marriage. Here I have left you, listeners, with an anticipation of the reply that was given by Eric to his mother-in-law. You may find it out in course of time. Some of you may have not read my book तेरा साथ रहे, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हिंदी की किताब है, पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ आए कि मैं ये क्या बताने जा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ क्रिएटिव राइटिंग्स के बारे में। इसकी पांडुलिपि बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, तेरा साथ रहे की। फिर भी मेरे पास डिक्शनरी थी, हिंदी की डिक्शनरी थी, इंग्लिश की डिक्शनरी थी, इंग्लिश की डिक्शनरी थी, हिंदी की डिक्शनरी थी। इस तरह से मैंने पांडुलिपि को तैयार कर दी और फाइनली पब्लिशिंग कंपनी को भेज दी। But I wanted to make it known here one more thing. Anticipation of an event or action is more important in character buildings. एक जिज्ञासा पैदा होना
कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है स्टोरी राइटिंग में. Here I end my video. But as we progress in the future videos, I would love to deal with characters, characterizations, and the character arc much in detail, as I've used them in my debut novel, Together with You Forever. उसका ट्रांसलेटेड वर्जन हिंदी में तेरा साथ रहे. Subscribe to the channel and please, please, please ask questions and comments. I am there available for Q&As. After the description is over, in respect of the content of my video, this will give me more strength to explain some of the aspects of the creative writing process. Thank you very much. धन्यवाद.